which platform you should sell to get the maximum sales, which platform is right for you. अगर आपको ये सारे questions हैं, and this video I'm going to explain you exactly all the pros and the cons and which marketplace to be sold. Now, to be really honest, it depends on which marketplace you should be selling, what category do you sell, and what price point are you selling. None of the platforms are bad. Every platform is good in its own way. Now, let me talk about some of the facts and some of the things that you need to consider when you are analyzing and thinking of which platform to start first. Now, let's talk about Amazon. Amazon is generally very good in terms of branding. अगर आपको कोई brand बनाना है marketplace पे, आप trader नहीं हो, आपको market में कोई अच्छा brand बनाना है, तो Amazon is best. Why? First of all, Amazon is in so many countries, more than 20 plus countries. Amazon has its footprint. So of course, there is a huge advantage because they are people who are in the business for years and decades. Secondly, Amazon gives you tools for branding like A+ content, video ads, so many other tools that helps you to create more brand awareness, which generally is not allowed or is not present in any of the platforms. So अभी आपको ये सोचना है exactly कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर है. मीशो है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है. आपको सबसे पहले ये समझना है कि कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है हर प्लेटफॉर्म में. खाली सेल्स हर कुछ नहीं होता है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट सेलर सपोर्ट. आपको ये चेक करना है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कैटलॉगिंग में, लिस्टिंग में, या कोई आपके लिस्टिंग में मैप कर रहा है, तो कौन सा सेलर सपोर्ट आपके लिए सबसे यूजर फ्रेंडली है. क्या मीशो का सेलर सपोर्ट बेस्ट है, क्या फ्लिपकार्ट का है, क्या अमेजॉन का है. कौन आपको जल्दी से जल्दी रेजोल्यूशन दे सकता है आपकी प्रॉब्लम से. इन माई ओपिनियन आई एम अ लिटिल बिट बायस्ड विद अमेजॉन एंड दैट इज कम्प्लीटली ओके. आपके लिए फ्लिपकार्ट बेटर हो सकता है, मीशो बेटर हो सकता है, एंड इट डिपेंड्स. मैंने मीशो पे कभी सेल नहीं किया अभी तक, बट इन माई एक्सपीरियंस अमेजॉन सेलर सपोर्ट इज लिटिल बिट क्विक. सभी सेलर सपोर्ट बैड ही होते हैं जनरली, बट अगर आपको चूज करना है कौन सा सबसे खराब है और कौन सा सबसे थोड़ा सा अच्छा है, तो अमेजॉन इज बेटर इन टर्म्स ऑफ सेलर सपोर्ट. आप कोई भी लिस्टिंग या आपका बिजनेस बैंक करते हो कोई प्लेटफॉर्म पे, you have to understand how good is their seller support in terms of removing all the problems that you have and getting your faster resolution. Because you have to understand money is time. Time is exactly money. जितना टाइम आपको टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, उतने आपके लॉस होंगे सेल्स में. दैट इज इवेंचुअली मनी एंड प्रॉफिट. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू थिंक ऑफ इज रिटर्न्स. रिटर्न्स कौन से प्लेटफॉर्म पे काफ़ी ज़्यादा कम आते हैं. जनरली मैंने देखा है कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न्स. जनरली अगर आप थोड़ा कम प्राइस वाला आइटम बेच रहे हो तो फ्लिपकार्ट पे सेल्स ज़्यादा होती है बट रिटर्न्स भी ज़्यादा आते हैं. तो आपको ये चेक करना है कि रिटर्न्स में सबसे ज़्यादा लॉस कौन से प्लेटफॉर्म पे है, अमेजॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है कि मीशो पे. अनदर थिंग दैट यू हैव टू थिंक ऑफ इज पेमेंट साइकिल. पेमेंट साइकिल किसका शॉर्ट है, कौन पेमेंट ज़्यादा होल्ड नहीं करता है और टाइम पे आपको पैसा देता है. अगर मीशो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, देन इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू गो विथ. If it is Flipkart and Amazon, then you should go with that. You have to compare for yourself cycle किसका better है. Generally Amazon ज़्यादा पैसा hold करता है as compared to other platforms and delay कभी नहीं होता पेमेंट में, but yes पेमेंट जो reserves में रहती है वो ज़्यादा होती है as compared to other platforms. Now let's talk about the longevity, right? Long term view. Long term अगर आप देखो कि Meesho currently is offering a 0% commission. इसीलिए बहुत सारा सेल्स उनकी बढ़ रही है. But why is that? बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है. जब एक टाइम के बाद फंडिंग निकल जाएगी, एवरीथिंग विल कम एट पार एंड दे विल स्टार्ट चार्जिंग योर लॉट ऑफ कमीशन. सो राइट नाउ ऑल द मनी दैट दे आर गेटिंग, दे आर स्पेंडिंग टू एक्वायर न्यू sellers and new buyers and making their platform popular. But that is again not a long-term strategy. अगर आप Amazon, Flipkart को देखोगे, their commissions are almost similar and they are already in the game for years and decades. So they are yet to stay. It's good to take a short-term benefit. अगर आप मीशो में बेच रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप मत बेचो, but also have your products and your focus on other platforms because Meesho's 0% commission is not going to be a long-lasting relationship. Yes, आप short term में अच्छा profit कर सकते हो, अपनी items बेच सकते हो, but long term में you have to think of a stable platform. Imagine करो आपने मीशो पे इतना सारा बेच लिया, आपकी सारी सेल्स उस पर हो रही है and there is nothing happening on Flipkart and Amazon. आप इस पर फोकस ही नहीं कर रहे. चांसेस आर वेरी हाई जब कमीशन बढ़ जाएगा आपके मार्जिन जीरो हो जाएंगे या कम हो जाएंगे बहुत, इट इज गोइंग टू बी लाइक अ डेड ऑफ योर बिजनेस. आपका बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो सकता है. अनदर थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज प्राइसिंग. जनरली ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप हाई टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो जो 1000 रुपये के ऊपर है,
अगर आप 2000 का प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे मीशो पे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट सेल्स ऑन मीशो बिकॉज जनरली द बायर मार्केट दैट मीशो इज सर्विंग इज फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड जनरली मीशो पे जो बाय करते हैं वो लो टिकट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बाय करने की ट्राई करते हैं. मीशो इज गुड फॉर लो टिकट, लिटिल बिट लेस क्वालिटी, but maximum volume sales, then Meesho is good with low price. But when it comes to branding, Amazon is good because Amazon is actually known for high quality buyers and premium pricing. So अगर आप कुछ expensive चीज़ें buy कर रहे हो, then Amazon is a good platform to go with. And also the trust of people on Amazon is amazing. Delivery time. Let's talk about the delivery time. Delivery time, we have observed Amazon can deliver within 1 day of ordering the product. Now why is that the case? Because Amazon has a lot of warehouses. उनके इतने सारे warehouses है across the nation कि अगर आप real में clusters में start करोगे Amazon पे deal करना, then most of the times you will get the products to the buyer in 1 day, which is phenomenal. Flipkart is reaching. It is now in some states वो कर पा रहे हैं, but not in all the states. So if you're looking for faster delivery, then Amazon is an amazing platform. Now I'm going to cover 2 more aspects of these kind of platform and which platform you should be choosing. But before that, I want you to comment below which platform are you currently selling and getting the maximum sales from. Now let's talk about the 2 more important aspects. Let's talk about the suspension. आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी marketplace की policy बहुत strict है in terms of suspending the account. अगर आप तीनों में से कंपेयर करोगे Amazon, Flipkart and Meesho, Amazon is one of the most deadliest marketplace when it comes to suspension. वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं without even telling you कि आपने क्या मिस्टेक की है और आपको फिगर आउट करना पड़ता है. It is very very difficult once your account is suspended to get it back. Meesho is not that of a problem. आप Meesho पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होता इतना जल्दी. Same is with the Flipkart. So when you are talking about everything else, suspension is also at the center of the thing. And the last and the most important thing I feel is all about your strength. आपको ये समझना है आपकी strength कहाँ पर है. Because अगर आप ये तीनों प्लेटफॉर्म पर देखोगे, it's a very very different platform. I have never seen a seller doing exactly the same sales on Flipkart and Amazon all the time. Of course there is an exception, but not always. Like most of the times, कोई सेलर अगर फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा कर रहा है तो वो अमेजोन पे इतना नहीं अच्छा कर रहा है. द रीजन इज ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर डिफरेंट. अगर आपकी स्ट्रेंथ है कि आपको एडवर्टीजमेंट, आपको ब्रांडिंग, आपको ये सारे टूल्स और आपकी एडवर्टीजमेंट नॉलेज इज वेरी वेरी गुड, देन अमेजोन इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू स्केल एंड like literally like get a lot of money and take a lot of market share and establish your brand. But आपकी स्ट्रेंथ है very good products but at a less price. You're a manufacturer, आपको एडवर्टीजमेंट ये सब चीज़ समझ में नहीं आती है, बट यू कैन ब्रिंग रॉक सॉलिड प्रोडक्ट, अमेजिंग प्राइजेस, वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, देन फ्लिपकार्ट इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. इफ यू आर समवन हु डील्स विद ट्रेडिंग चीप प्रोडक्ट्स आई मीन द प्राइस इज चीप, very $299, $499, $399, then Meesho is an amazing platform. So work on your strength in terms of choosing the marketplace. Ideally, in conclusion, आपके प्रोडक्ट सारे मार्केटप्लेसेस पे होने चाहिए because you never know where you get maximum sales from. अगर आपका 1000 ऑर्डर्स अमेजोन पे आते हैं और अगर 10-20 भी आते हैं फ्लिपकार्ट एंड मीशो पे, इट्स गुड बिकॉज यू आर स्टार्टिंग टू बिल्ड योर बेस. Ideally, you should go big on one platform, but you should consider all the factors. That's it from this video. I hope you have understood which platform is best as per the factors and your strength. Alright, I'll see you in the next video.